तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा जो कि ईयरबड से होगा। ठीक है, यहाँ जो ईयर कॉटन बड आपको दिख रहा है, आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं इसका यूज़ करते हुए मैं एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और ये वीडियो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इससे पेंटिंग बनाना चाहते हैं। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का पेंटिंग और स्केचिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्मॉल बेबी का एक आउटलाइन ड्रॉ किया मैंने, और इस पर मैं एक ईयर कॉटन बर्ड से मैं इसको पेंट करूँगा, इसको पेंटिंग बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर पूरा देखिएगा कि मैं किस तरीके से ईयरबड के यूज़ करते हुए मैं एक अच्छा पेंटिंग बनाऊँगा। फ्रेंड, आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें।
fashion bring the swains together, and when the west is red with the sunset embers, the lover lingers and sings, and the maid remembers. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried, lo, as the singer lies in the field of heather, songs of his fashion bring the swains together, and when the west is red with the sunset embers, the lover lingers and sings, and the maid remembers. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings.